Now, the rise of the internet has been phenomenal, especially in the post-pandemic world. 658 million, that is the number of internet users in India as of January 2022. And everyone seems to be online. But there is still a huge digital divide between urban and rural India. The digital penetration in India stands at about 45%. That is less than half the Indian population that has access to the internet. Despite all this rise in technology and all our excitement, digital illiteracy is at an all-time high in rural India, especially among women. Now, improving digital literacy and expanding access to digital technologies is critical to take India forward and to enable women from all walks of life to benefit from digital transformation. The Digital Empowerment Foundation is an NGO that has helped bring about that change. With their various campaigns and initiatives, they are bringing digital literacy and familiarity to the rural and tribal women of India. Today, I'm going to tell you about one such campaign. This is called Go Online as Leaders, a digital literacy and mentorship initiative that seeks to mobilize urban women who hold expertise in their respective domains to inspire, guide, and encourage rural and tribal girls to become digitally enabled agents of change for their communities. This campaign has given women from all ages the courage to break the barriers of tradition and enable girls to gain exposure and access to digital tools and learn about its use and the latest technology innovations that are happening around the world. Today we meet a very special person, 21-year-old Neha Salina from Ranchi, who enrolled for the program and is now enabling other girls and women from her village to inculcate entrepreneur skills in them. Their heads might be covered and their hands might feel heavy with the weight of the bangles. But it is their eyes that twinkle with curiosity to learn something new. The girls of Itki, Ranchi have not only learned how to use smartphones and computers, they now dream to be entrepreneurs. The effect of the lockdown were felt in these parts of the village as well. Girls were restricted to their homes because of lack of smartphones and internet connection. They couldn't complete their studies. These girls felt the absence of smartphones and the impact it had on their future. Meet Neha Salina. Residing in a small village in Ranchi's Itki district, Neha would help her mother with household chores after school. In 2020, when Neha met with a representative of the Digital Empowerment Foundation, her life took a turn for the better. With the help of the foundation, she learned how to use smartphones and computers. मैं मैट्रिक के बाद कुछ भी नहीं जानती थी, जैसे कि मतलब कि घर के कामों में ही जुड़ी हुई रहती थी और बाहर के कामों में उतना इंटरेस्ट नहीं रहता था कि अपना लाइफ में क्या चीज़ मुझे अचीव करना चाहिए था वो चीज़ नहीं पता था। और तराना मैम के थ्रू जब वो मुझे बताई कि वो डीएफ में जुड़ना चाहती है या नहीं, तो मैंने हाँ बोली। और मम्मी पापा ने हमेशा मुझे यही बोला कि पढ़ते रहो आगे और पढ़ाई करो, कभी मुझे इग्नोर नहीं किए, मतलब कि हर चीज़ में मेरा साथ दिए हैं। Tarana, the representative of the Digital Empowerment Foundation institution, who is responsible for driving the program, says that the girls of the village understood the importance of smartphones and computers. These girls know that without smartphones and computers, they will be left behind by the rest of the world. घर में गांव में मेरी जो कुछ लड़कियां ऐसी थी जो मैट्रिक के बाद इंटर के बाद घर में रहती थी, उन लोगों को मैं घर पर लाके कंप्यूटर क्लास, डिजिटल क्लास, मोबाइल सिखाना और उसमें जितनी भी सुविधाएं हैं ऑनलाइन की, डिजिटल लिटरेसी की सारी सुविधाएं इन लोग को दी। इन लोगों को डिजिटल के बारे में बताया, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है, कैसे चेक किया जाता है, ये सब चीज़ मैं इन लोगों को बताई। The girls and women from nearby villages come to Itki to learn how to use smartphones and computers from Neha. She is running a digital center where she is helping empower women. This has been possible because of the Digital Empowerment Foundation.
These women who never left the village alone are now breaking barriers by becoming independent. Equipped with a smartphone, the world is now their oyster. Goal or going online as leaders is an initiative by the Digital Empowerment Foundation that has helped women like Neha to become digitally savvy. It is a mentorship program where women who are leaders in their fields take online classes and inspire these women. 2019 में एक स्कीम आया था गोल मेंटी FB गोल ग्रुप करके, जिसमें 10 लड़कियों का चयन किया गया था। उन लोगों को मेंटी का नाम दिया गया था। उन लड़कियों को 2 ग्रुप में बांटा गया था और उसकी 2 मेंटर थी, एक रूपाली शर्मा, एक श्रद्धा सूद। वो उन लोगों को मोबाइल के माध्यम से दिल्ली से इन लोगों से कनेक्ट करती थी और वो ग्रुप के माध्यम से बात करती थी। ऑनलाइन क्लासेस होती थी जिसमें मैम हम लोगों को ऑर्गेनाइटिव, कोलैबोरेशन, लीडरशिप, सोशल जैसे कि पढ़ाई से रिलेटेड बहुत कुछ सीखे हैं और बहुत चीज़ के बारे में बताती थी। और जैसे कि कोई भी एक्टिविटी देती थी जिसमें हम उसे करते थे और हम लोगों को लीड करने का मौका मिलता था, दूसरों को प्रोत्साहन करने का मौका मिलता था। और लोगों को यही सिखाना चाहती हूँ कि जिस तरह मैं आगे बढ़ रही हूँ वैसी तरह वो भी आगे बढ़े। सर, यहाँ पे मैं DEF के थ्रू पढ़ाई करती हूँ और हम लोग यहाँ डिजिटल एजुकेशन प्राप्त करती हूँ और जिसके थ्रू हम लोग को इतना डिजिटल के बारे में पता नहीं था। वो मोबाइल के द्वारा हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना सीखे हैं, ऑनलाइन टीचिंग करना सीखे हैं। हम लोग हर लड़की अपने में मजबूत हुए हैं और हम लोग को बोलने में झिझकते थे कहीं पर, वो अब नहीं है। अब हम लोग में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम लोग हर चीज़ को खुद से कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। हम लोग को किसी पे आश्रित होने का ज़रूरत नहीं है। Neha is now an entrepreneur and runs a digital center in her village where she helps her community with all their bank work, paperwork and pensions. She is doing all this through her smartphone and tablet. DF के थ्रू सूचना पिन्योर में भी मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। सर, जैसे कि बहुत सारे लोग आते हैं, उसमें परेशानी रहती है कि उनको सरकारी स्कीम के थ्रू किसी को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और इंदिरा आवास सब जैसे कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो गरीबी से जूझ रहे हैं। बहुत से ऐसे बुज़ुर्ग हैं ऐसे जिसे वृद्धा पेंशन की ज़रूरत हो, विधवा पेंशन की या इंदिरा आवास सबकी ज़रूरत हो, तो उसका फॉर्म हम लोग भर देते हैं जिससे कि उन लोगों को सुविधा हो और हेल्प करते हैं इतना कि वो लोगों तक ये पहुंच जाए। ये सब सारे स्मार्टफोन के थ्रू ही किया जाता है। और जैसे कि कोई कंप्यूटर सीखना चाहता है तो हम यहाँ कंप्यूटर क्लास भी है जिसमें हम लोग कंप्यूटर सिखा भी देते हैं। और स्मार्टफोन के ही ज़रिए मैं सारा कुछ अपना जितना भी रहता है पढ़ाई से रिलेटेड अगर या कुछ भी रहता है वो चीज़ सब कुछ कर लेती हूँ और दूसरों को भी सिखाती हूँ। स्मार्टफोन आदमी के जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। जिस तरह से हम लोगों को खाना पीना कपड़ा की ज़रूरत है, उस तरह से अभी स्मार्टफोन की भी ज़रूरत है। क्योंकि अभी के हिसाब से बिना स्मार्टफोन के जीवन अधूरी है मेरे हिसाब से। क्योंकि हम हर कुछ उसी से कर सकते हैं, चाहे हमको दुकान का सामान लेना हो, चाहे हमको कपड़ा ख़रीदना हो, चाहे हमको तोलमोल भाव पता करना हो कि बाज़ार की क्या स्थिति है, न्यूज़ देखना हो, तो अभी हमको ना टीवी का ज़रूरत है ना ही हमको पेपर का ज़रूरत है। वो सारा चीज़ हमको स्मार्टफोन से मिल सकता है। Without smartphones and digital literacy, these girls felt that they had no future. Today, they are confident women who are no longer dependent on others for their survival. With a smartphone in hand, they are out to achieve their dreams and break every barrier that comes their way. With camera person Vicky, Haribansh Sharma for NDTV. What an absolutely great story, and now I have the privilege to actually speak with her.
Thank you so much, Neha, for joining me on the show. तो नेहा, आपने कहाँ से learn किया about this program और आपने क्यों सोचा why should you be part of it? सब पहले तो मैट्रिक के बाद कुछ काम नहीं था, घर के सिवाय कुछ काम नहीं था। इस वजह से जब तराना मैम बोली कि अगर जुड़ना चाहेगी तो जुड़ सकती है, तो इसी वजह से कोई काम नहीं वजह से मैं वहाँ जुड़ी। उसके बाद फिर जुड़ने के बाद हमारा ऑनलाइन क्लासेस होने लगा। उसके बाद फिर मोबाइल स्मार्टफोन हम लोगों को मिला और कुछ भी मैम जैसे कि एक्टिविटी देती थी उसी के थ्रू हम लोग मोबाइल स्मार्टफोन से ही किया करते थे। Now, Snapdragon is calling all the Cell Guru fans to join their global community called Snapdragon Insiders. This gives you access to the latest scoop on Snapdragon tech, a chance to connect with the experts behind the scenes, premium experiences, exclusive contests, and much, much more. Look, I'm already a Snapdragon Insider. You can become one too by simply following Snapdragon on Twitter or Instagram. Their handle is right in front of you. Also, give yourself a chance to win a Snapdragon smartphone by participating in the NDTV Snapdragon contest at ndtv.com/unleash your dreams. Go there and actually unleash your dreams.